going to learn English of class 5. What were we studying last class? We learned your first lesson, right? We finished a poem and then we are upon the first lesson, the ant and the dove. You remember the story that we shared? I will help you recollect it. So, what did we store? Who were there in the story? The ant and the dove were there in the story. The ant was very thirsty. She went to the river to drink water. And what happened then? She lost her balance, अपना संतुलन खो बैठ के. What happened? She fell into the water. When you fall into the water, what do you should say if you are in trouble? You should say help. So what did the ant do? The ant cried, help, help. What did she cry? She cried, help, help. Who was sitting on the tree? A dove was sitting in a tree. She heard the ant cry. The dove dropped a big leaf into the water. What did the dove do? She dropped a big leaf into the water. Then what happened? Then the ant climbed up on the leaf and the leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. Ant बच गया. उसके बाद क्या हुआ बच्चों? What happened after that? After some time, after some time, the ant saw a hunter. Right? What was the hunter doing? He was pointing the arrow. Arrow. ये है arrow. तो arrow towards the dove. Okay, so he wanted to kill her. Who wanted to kill her? The hunter wanted to kill the dove. And who saw this? The ant saw this. Very good, kids. Then what happened? The ant thought of an idea and he climbed onto the hunter's leg. Yes. And the ant bit the hunter's leg. And the hunter said, ouch! Cried the hunter, and his arrow dropped. The dove was saved. The ant and the dove helped each other like good friends. What was the moral of the story, kids? Do you remember it? A friend in need is a friend indeed. This is what we learnt in our last class. It's a wonderful story, no? We learned कि हमें जब भी तकलीफ हो, हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो हमें क्या करना है? मदद मांगना चाहिए. मदद मांगना पहला स्टेप है तरक्की के तरफ. So if you have to progress in your life, you have to learn to ask help when you need it. ठीक है बच्चों. हेल्प मांगना बहुत ताकत वाली चीज होती है. इट्स अ पावरफुल थिंग. तो हमेशा जब भी आप कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो लाइफ में, आप क्या करना चाहिए बच्चों? आपको मदद मांगना चाहिए, हेल्प मांगना चाहिए. आपके माँ बाप से, आपके बहन भाई से, आपके आसपास के लोगों से आपको मदद मांगना चाहिए जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम में हो. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. एंड अगर कोई प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता हो तो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. तो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. नाउ वी हैव लर्न द लेसन. Yeah, it is a wonderful story. So what are we going to do? We are going to do your comprehension questions. आपके जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपके बुक बैक एक्सरसाइज है, उसमें कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आज हम लिखने वाले हैं बच्चों. क्या करने वाले हैं? वो पढ़ के लिखने वाले हैं. सो लेट्स डू इट. कम ऑन. यू हैव कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. Now that we have revised and looked back into the lesson, और एक बार हमने पढ़ लिया है लेसन को, तो हमें क्या है? हमें ये आसानी से कर पाएंगे. सो व्हाट आर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके. तो पहला जो आपसे सवाल पूछा गया है वह है where. What does where mean? Where का अर्थ मतलब कहाँ. Where did the ant go and
वाई। तो क्या पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे? वेयर डिड द एंट गो एंड वाई? ओके, सो वेयर माने कहाँ, द एंट, एंट यानी कि हमारा जो चींटी है, कहाँ गया और क्यों गया, वाई माने क्यों। ठीक है बच्चों, तो इसका जब आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हमें तो पता है यहाँ पे द एंट वॉज वेरी थर्स्टी। तो हमारा जो वाई है उसका जवाब मिल गया ना, द एंट वॉज वेरी थर्स्टी। वेयर डिड ही गो? ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। सो व्हाट डू यू से हियर? द एंट was very thirsty, so he went to the river. So आपको समझ में आ गया ना, कहा क्या लिखा है? द एंट वॉज वेरी थर्स्टी। द क्यों पूछा गया ना, क्यों वो रिवर गया पूछा गया। वेयर डिड द एंट गो? कहाँ गया और क्यों गया? दैट्स व्हाट देव आस्क्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो व्हाट डू, क्यों गया पहले लिख देते हैं। द एंट वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी उसको। सो शी वेंट, so she went to the river, so she went to the river to drink water. क्या पीने गए थे? To drink water. So what you have to remember कि आपसे दो सवाल पूछे गए हैं, कहाँ और क्यों ant गया। So the ant was very thirsty, so she went to the river, where? To drink water. ठीक है, आपको ये है आपका जवाब। सो यू हैव नोटेड इट, all of you have noted it down. I'm going to the next question. Okay, how did the dove save the little ant? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ डिड द डव, हाउ डिड द डव, यहाँ पे क्या पूछा है? डव, कैसे डव ने सेव यानी कि बचाया द लिटिल एंट। तो हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट? We know that when the ant was in trouble, she shouted help. And then what did the dove do? The dove dropped a leaf into the river. You remember that part? Yes, so what you have to write? The dove, ऐसे यहाँ पे देखिए, द डव, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सेव्ड, saved the little ant by dropping a leaf into the water. तो तो क्या किया हमने, क्या किया, जो हमारा सवाल पूछा गया है उसी प्रकार हमने लिख दिया। द डव सेव द लिटिल एंट, यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है। कैसे, हाउ पूछा गया, तो बाई ड्रॉपिंग अ लीफ इनटू द वाटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने लिख दिया है। ये इसको यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए, आपको थोड़ा पास्ट टेंस में लिखना है, सेव को सेव्ड और save the little ant लिखना है। Then you have to write by dropping a leaf into the water. Okay? Very good. Now we'll go to the third question. आपको समझ में आ रहा है ना? Everybody is understanding. Whenever we read a story, we try to understand what is the author telling us. जो लेखिका है या लेखक है, वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो समझने की कोशिश करना है। And then you should be well versed with the story ताकि आप सही प्रकार लिख पाए। ठीक है? So now we are going to the third question. See, who wanted to kill the dove? तो what is the question here kids? Who wanted to kill the dove? तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे?
कौन, wanted to kill यानी कि मारने की चाहत, who wanted to kill the dove, तो आपको पता है who wanted to kill, yes, very good kids, the hunter wanted to kill the dove, so what you will write, who के बदले the hunter लिखेंगे, यहाँ पे बहुत आसान है, हु के बदले द हंटर लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, द हंटर वांटेड टू किल द डव, ओके, सो व्हाट यू हैव सीन, हु के बदले कौन के बदले द हंटर, the hunter wanted to kill the dove, that's how you write this answer, it's very simple. Okay, now moving on to the third question. The third question is, why did the ant, why did the ant bite the hunter? Why did the ant bite the hunter? आपको पता है what happened? Ant ने क्या देखा? What did the ant see? The ant saw the hunter pointing the arrow towards the dove. So to save the dove, he bit the hunter's leg. Okay, so we know the story, right? So what you will say? The ant, why did the ant bite the hunter? The ant bit the hunter, ऐसे लिखेंगे, the ant bite का जो past tense है bit होगा, the ant bit the hunter to save the dove. बस बहुत आसान, the ant bit bite, यहाँ पे क्या लिखा, the ant bite the hunter, why did the ant bite hunter, why मैंने क्यों, why did the ant bite the hunter पूछा गया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, the ant, इसको इसी प्रकार यहाँ पे लिख रहे हैं, the ant bite का past tense लिखना है bit, the ant bit the hunter to save the dove. Okay, this is how you write the answer. Now next question is very simple, हमें तो ये बहुत अच्छी तरह पता है. The next question is, the next question is, what is the moral of the story? What is the moral of the story? तो आपका स्टोरी का जो मॉरल है, we had spoken about it, no? What is the moral of the story? Very good. Tell me in the chat box, kids. I'm very well. A friend in need is a friend indeed. So a friend in need is a friend indeed. ऐसे quotes के अंदर लिखे, is the moral of the story. तो क्या लिखना है, वॉट के बदले आपको मॉरल लिखना है, उसके बाद इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इस प्रकार लिखना है. सो वी हैव रिटन व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. हमें कोट्स के अंदर, इसको कोट्स कहते हैं, कोट्स के अंदर इसको लिखना है. ठीक है बच्चों, so this is all the answer on questions of the in part of comprehension questions. ठीक है, so now we are going to go to true and false. Have you taken a note of this, kids? If yes, please raise your hands. Very well. So now we are going to go to the true and false questions. It's very easy. We all know the story very well. So the second part is true and false question. Okay, so आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स में क्या, टी ट्रू है तो टी लिखना है, एफ है तो फॉल्स लिखना है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट्स राइट इट डाउन, कम ऑन एवरीबॉडी. आपसे पूछा गया है, द लिटिल एंट वाज वेरी हंग्री.
So the first question asks is, the little ant was very hungry. What does hungry mean, kids? What does hungry means? Hungry means भूखा. हमारा ant भूखा थोड़ी था. No, the little ant was very thirsty. So this makes the sentence false. So this sentence is false. The little ant was very thirsty, ना कि hungry. तो ये गलत हुआ. So we are writing false here. F, false. Okay. Now the next question here is, the ant fell into the water. Is it correct? The ant fell into the water. हाँ, हमारा जो ant था, he fell into the water, right? Yes, so this will be true. Very good. Now, next question here I'm asking is, let me know T or F in the chat box, kids. Next question is, the ant saw a hunter. Is it true or false? The ant saw a hunter. Ant ने एक hunter को देखा. सही है कि गलत है? टी डालिए अगर इफ इट्स सही, और एफ डालिए अगर फॉल्स है बच्चों. वेरी गुड, ट्रू. द एंट सॉ अ हंटर. नो, उन्होंने देखा था. हंटर क्या कर रहा था? वाज पॉइंटिंग एन एरो टुवर्ड्स द डव. सो द एंट सॉ अ हंटर. इट इज ट्रू. द डव was killed. Is it true or false? The dove was killed. Dove गुजर गया, मर गया? No, the dove was not killed. The dove was saved. Now, बच्चों, ant bit the hunter's leg and the dove flew away and the arrow missed the dove, right? So it is false. The dove was killed. नहीं, dove was saved ही सही रहेगा. Now, the next question here is, the ant climbed up the tree. Was it the tree that the ant climbed? What did the ant climb? Tell me in the comment section. What did the ant climb? The ant climbed the leaf, because what did the dove drop? The dove dropped a leaf. So the ant climbed a leaf, not a tree. So what you will say? The ant climbed up the tree? False. And then the last question in true and false is, the ant and the dove did not help each other. The ant and the dove did not help each other. Is it true? No, it is false, because they helped each other. एक दूसरे की मदद किया था ना ant and dove ने. So did not. आपको ये ध्यान देना है. If the question was, statement was, the ant and the dove did help each other, माने true होगा. But यहाँ पे did not आया है. तो this is a false statement. Okay. So these are the true and false statements asked, and we have answered all of them. Please write it down in your textbook, kids. Once you're done, please give a thumbs up. Very good. Okay, you're done, all of you? Then we'll move on to the next question asked. Okay? Okay. So the next question asked here is, they have given you a box like this. They've given you a box like this, then they've given you some questions. Okay? So you have to find the answer. Okay? So what they have said, the first question is, it comes after 7. 7 के बाद कौन आता है बच्चों? After 7 comes 8. So what's the spelling of 8? See?
यहाँ लिखते हैं इस प्रकार। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इट कम्स आफ्टर 7, व्हाट कम्स आफ्टर 7? हाँ बच्चों, सही कहा, 8 ही आता है। 8 in English is 8. So what do you write? EIGHT, 8. Okay. Then the next question is, birds pecks with these. Bird peck with these. With what is the bird peck? Peck यानी कि ऐसे ऐसे करते हैं ना birds अपने चोंच के साथ. तो what is that called in English? The bird's beak. So the birds plural है, तो यहाँ पे हम plural में लिखेंगे the bird peck with these. कौन है? Beaks. Okay, the birds peck with these. What are they called? They are called the beaks. Okay. Now the next question you have been asked is, we cannot eat without these. हम इसके बिना खाना नहीं खा सकते. We cannot eat without these. What is that? What do you think is that? Yes, it is teeth. Teeth. Teeth का spelling इस प्रकार लिख दीजिए. Teeth. We cannot eat without these. What are those? Those are teeth. Okay. Now, the next question is, this animal, next clue is here, this animal has a hump. कौन से एनिमल को हम्प है? हम्प यानी कि जैसे हमारी राजस्थान में बहुत सारे डेजर्ट में पाए जाते हैं ये कौन सा जानवर है? Are you able to make out? Yes, it is a camel. Camel. Please write it down like this. Note it in your book. Very good. Now can we move on to the next clue over here? The next clue here given here, it is the opposite of black. Black रंग, काले रंग का जो opposite है, it is the opposite of black. What is it? Very good. White. So it is the opposite of black. What is that? It is white. Okay, kids? So write it like this, white. Very good. Now, the other clue that has been given here is, our books are made of this. Our books are made of this. हमारे किताब इससे बनते हैं. क्या है? कागज ना. कागज को क्या बोलते हैं? What do we say to that? Paper. Very good. Paper. Okay. Our books are made of this paper. आप pages भी लिख सकते हैं. Pages भी लिख सकते हैं. Paper भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों? Pages. Okay. So paper. Books are made up of paper. Now, it is the opposite of. Next clue is, it is the opposite of sour. Sour यानी कि खट्टा. SOUR. Sour यानी कि खट्टा. It is the opposite of sour. What is opposite of sour? मीठा. Sweet. Sweet is the opposite of sour. Okay, sweet is the opposite of sour. Okay, बच्चों, sour. Now the next clue given is, we have these in our eyes. We have these in our eyes when we are sad. जब हम उदास होते हैं. सैड यानी कि जब हम उदास होते हैं, हमारे आंखों में आते हैं. क्या है वो? बताइए, सोच के बताइए. लेट मी नो द
Chat box. What is it? Yes, very good. Tears. आंखों में आंसू आ जाते हैं ना. Tears do come, no, when we are feeling very sad. Yes. Now the last question here is. The last question here is. See, this is the clue. It is a huge bird. It is a huge bird. बड़ा पंछी है flies that flies high in the sky. It is a huge bird that flies high in the sky. Which bird is that? सोच के बताइए. बड़ा पंछी है जो आसमान में उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. Which bird is that? उसके जो पंख है बहुत चौड़े हैं. इट हैज अ वेरी ब्रॉड विंग स्पैन. तो लेंथी विंग स्पैन. कौन सा बर्ड है ये? ई से शुरू होता है नाम उसका. ये हमारा क्लू है. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस, ईगल. Eagle. It is eagle. So now we have done our third activity also. They have given us some clues and they have given us clues here, statement clues here. और यहाँ पे ऐसे कहाँ पे ई आ रहा है उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है हमारे puzzle में. तो we have sorted out a puzzle very well. So kids, now let's move on to the next activity. It's very simple. Let's do it. Come on. You have noted this down? If yes, give a thumbs up, everybody. Okay. Okay. Let's move on. That's great. Now, okay. So now we are going to move on to the next activity. The question here is language practice. We have to complete the following sentences using past tense of the given word. Okay. इसमें आपसे क्या बोला? सेंटेंस को कंप्लीट करना है पास्ट टेंस का उपयोग करके. Past tense. Okay. Past tense of the verb. Okay. This is the question asked. Now the first question here, statement is here. Alok dash the job last month. So the question asked here is, the verb given here is leave. तो leave का past tense क्या होगा बच्चों? आलोक लीव द जॉब लास्ट मंथ. लास्ट मंथ मैंने पिछले महीने ही छोड़ दिया था. अभी छोड़ने वाला है, छोड़ दिया. तो छोड़ दिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है बच्चों? लेफ्ट. आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ. ओके. लीव का जो ऑपोजिट होता है, आई मीन ऑपोजिट नहीं बच्चों, सॉरी, पास्ट टेंस होता है वो है लेफ्ट. ओके. आप लेफ्ट, आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो जाइए. यहाँ पे लीव का पास्ट टेंस है लेफ्ट. आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ. ओके. नाउ राइट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक किड्स. कम ऑन. वेरी गुड. नेक्स्ट, प्रीति. प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल. हमें क्या वर्ब दिया गया है? व्हाट वर्ब हैज बीन गिवन टू अस? लेट्स सी हियर. दे हैव गिवन अस लूज. ओके. तो लॉस. सो प्रीति लॉस हर पेन इन द स्कूल. लॉस का जो हमें पास्ट टेंस लिखना है. पास्ट टेंस माने जो गुजर गया समय है, जो गुजर गया, हो गया, खत्म हो गया. तो दिस लॉस का जो पास्ट टेंस है वो क्या है? लॉस्ट. प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल. ओके. कहाँ पे गुम हो गया? Where did it get lost? It got lost in the school. So loss का जो past tense है वो है lost. Okay बच्चों. Now the third sentence given here is Barkha. Oh, my name is given here. Barkha. Barkha dash her homework. Dash her homework at
5 o'clock. बरखा डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock. कौन सा वर्ब दिया गया है यहाँ पे? फिनिश. तो व्हाट वुड यू राइट? फिनिश का पास्ट टेंस क्या होगा? बरखा फिनिश्ड. ई एड ऐड कर रहे हैं, एच के पीछे ई एड. फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock. बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock. Very good. Now, the next and last sentence is Sunil dash his books on the table yesterday. और यहाँ पे जो verb दिया गया है, what is the verb given here? It is keep. Okay? So what is the question asked here, kids? Sunil dash his books on the table yesterday. Keep is a word. Okay? So what do we do here? So we can say Sunil keep का जो past tense वाला verb है, it is kept. Sunil kept his books on the table yesterday. So these are the past tense of these verbs. So leave का जो past tense है left, lost का lost, finish finished, keep kept. Okay, so I hope everybody has noted this down. With this, the book back exercises, comprehension question, word power of your lesson, the ant and the dove is completed. And they've asked you the fifth question. Fifth question activity is to draw a picture of the story just like how I have done so. Okay, first you can draw 4 pictures: the ant falling into the water, the ant being saved, the hunter aiming at the dove, and then the dove being saved by the ant, and you can write the moral of the story at the end. So this is your last activity. You can do it and share the pictures with me, and I would love to see them. Okay, that's great, kids. So now we'll end the class, today's session. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat.